So Z is for previous question. If you want answers, Z is given by how much? 1 by z integration minus infinity H u naught and under root 2 pi m and kbt to the power 3/2. ठीक है? kbt to the power 3/2. This will be the Z and u will be 3/2 kbt and obviously CV will be 3/2 R. आ रहा है परमप्रीत? Yes, sir. Okay. Please note down everybody and try it. Now, next problem I am doing is for photons. So suppose you have n photons in three-dimensional system, volume V, and equilibrium, temperature is equal to capital T. It is like this. And we have to write down A, the partition function B, the energy of such photons, and C, the specific heat of such photon. Okay? So what is the first step? First step is to write the Hamiltonian H, and that Hamiltonian in the case of photon, you know, is equal to PC, right? Photon के case में E square, what is the energy? E is equal to, E square is equal to P square C square plus m naught square C to the power 4. This rest mass is 0, so H will become PC, okay? Correct? So what will be the partition function? Z1, three-dimensional. बोलते जाओ भाई. 1 upon H cube. H is not having any term. Let me write it like this. Let me explain everything. E to the power minus beta PC into dP dQ. Are you getting this, everybody? Yes, sir. Now this dq is actually three-dimensional. It is dx, dy, dz, right? Huh? So it is actually written like this sometimes to make it more clear. d3p and d3q, okay? So it is actually d3q means small volume, dx, dy, dz. So that will be integrated to give complete volume, no problem. V by h cube आ जाएगा. Correct? और यहाँ बन जाएगा इंटीग्रल e to the power minus beta pc into dpx, dpy and dpz. ये बन जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल. Yes or no? बट अगर आपको याद हो तो I can use it intelligently that suppose I have dx, dy, dz in Cartesian, it can be equivalent to 4 pi r square dr in spherical polar. Yes, sir. yes sir So similarly in momentum space, this is very intelligent thing. Please see it carefully. dpx, dpy, dpz can be written as momentum sphere 4 pi
p square dp. Correct? So z1 here will become v by hq integral 0 to infinity e to the power minus beta pc into 4 pi p square dp. कहीं समझ नहीं आए तो पूछ लेना. This will become the partition function of a photon gas. What kind of system we are discussing? Photon gas. So here we had limits minus infinity to plus infinity, but because of this transformation, the limit became p 0 to infinity. This is something very, very interesting, you see. है या नहीं है? Hello, sir. Hmm. So please repeat the last two lines. Your voice was not clear. There is no last two line, bhai. I don't remember like this. What is last two line? आपको ये पूछना पड़ेगा, ये बता दो, ये बता दो, ये सब इस तरीके से पूछो. कौन सी चीज पूछनी है बताओ. सर उस वक्त आप क्या लिख रहे थे वो मुझे नहीं दिख रहा, तो दैट्स व्हाई आई एम दिख आस्किंग. नहीं रहा है हाँ सर, मेरे साइड शायद ये इशू है, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ. तो ऐसे लास्ट लाइन तो मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला होगा. सर लास्ट आपने जो पार्ट आप समझा रहे थे ना, dx dy dz के बाद वो दो पार्ट प्लीज. ये वाला. हाँ सर, इसके बाद जो आप बोल रहे थे वो पार्ट प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए. मैं ये समझा रहा था कि जैसे कोई स्मॉल वॉल्यूम है, ये स्मॉल वॉल्यूम मान लो कार्टेशियन में dx dy dz है, तो स्फेरिकल पोलर में यही वॉल्यूम लिखा जा सकता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर. हाँ, अगर थीटा और फाई में सिमेट्री है तो इट विल बिकम 4 पाई आर स्क्वायर डी आर एज ए स्मॉल वॉल्यूम. सो इसी तरह से जहां पे जो dpx dpy dpz लिखा हुआ है, इसकी एनालॉजी मैं यूज कर रहा हूं. आई एम यूजिंग द एनालॉजी कि same dpx dpy dpz can be written as 4 pi p square dp. So now there is a small cube made up of dpx dpy dpz transformed to 4 pi p square dp by this analogy. Okay, ओके सर. so this is something to, if you are seeing it first time, you will have to understand this, what kind of analogy I am making. और वो यूज कर लिया मैंने, तो p की लिमिट आ गई 0 टू इंफिनिटी, और अब इंटीग्रेशन बड़ा ही आसान हो गया क्योंकि ये तो वेल नोन इंटीग्रेशन है. सो दिस विल बिकम 4 pi v by h cube. और what is integral 0 to infinity x to the power n e to the power minus alpha x dx? बताओ. It is gamma n plus 1 upon alpha n plus 1. So this will become gamma 2 plus 1 upon alpha is beta c 2 plus 1. So this will become
8 pi v by h cube c cube into kbt whole cube. देखो अब समझ आ रहा है? This is Z1. And if I consider n photons and photons to be indistinguishable, so it will become Z1 to the power n by n factorial for n indistinguishable photons. For n indistinguishable photons. For n indistinguishable photons. ये ठीक है भाई? Yes. इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ. Z हो गया. Z is done. Now, what is U? U क्या होता है? -1 by z del z by del beta. U is kbt square 1 by z ना? 1 by z Yes. kbt square del z by del t. तो कितना हो जाएगा? 1 by z मतलब h cube c cube by 8 pi v kbt cube into kbt square and del z by del t means 8 pi v by h cube c cube kb cube 3t square. Eight pi v h cube c cube KB क्यूब भी कट जाएगा. kb cube and it will become 3 KBT. 3 kbt. KBT. 3 3 3 kbt. So this was 3D now. We got 3 kbt. If we would have taken 2D, we would have got 2 kbt. And if we would have taken 1D system, we would have got 1 kbt. Okay. So this we got, and now CV is very easy. It is 3R. देखो ध्यान से इसको डिफरेंशिएट करो और Na से मल्टीप्लाई कर दो तो Kb into Na will become R, so it will become 3R. और अगर एनर्जी n फोटॉन्स के लिए निकाली तो कितनी हो जाएगी? n फोटॉन्स के लिए 3n kbt. समझ आया? फोटोनिक सिस्टम
Clear? Yes, sir. Or any doubt is there? Please ask. Can I erase? Yes. Yes, sir. ठीक है मीनल, सारे स्टेप क्लियर है? Yes, sir. और सब लोग बताओ भाई, स्टेप्स आर क्लियर? विनीता, Yes, sir. सौटन, steps are clear? So we are okay. Now a very interesting system. So now we are taking some systems in which potential energy is also present. So that makes system very interesting. So suppose we have a cylinder like this, and this is z-axis. The cylinder is kept on xy plane like this. This is z-axis, okay? And there are a lot of particles in it. Suppose gas molecules or whatever you want to take, and there are n particles. Okay, and n particles are kept in a vertical cylinder of length L. The cylinder has got length L, and area of cross section is along the xy plane. You can see this. This is area of cross section, capital A. This is on the xy plane. This question has been asked in this question is from uh, a reef, but this has been asked in every exam, including JEST, TIFR, NET, in many ways. But the fundamental one I will tell you. So this is a system, एक सिलेंडर है, सिलेंडर में पार्टिकल्स भरे हुए हैं और सिलेंडर ऐसा रखा हुआ है कि वो XY प्लेन पे उसका जो क्रॉस सेक्शन है that is coming on the XY plane, और सिलेंडर में सिर्फ एक ही पोटेंशियल काम कर रहा है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उन पे आपस का इंटरेक्शन वगैरह काम नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही पोटेंशियल में वो रखे हुए हैं, एंड दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सिर्फ ये सपोज काम कर रहा है, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑलराइट, तो आपको इसका पार्टीशन फंक्शन लिखना है और आपको इंटरनल एनर्जी बतानी है, एवरेज इंटरनल एनर्जी U, जब दोनों ही केस में बतानी है जब जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है दैट इज मच मच ग्रेटर देन केबीटी, और एक केस में बतानी है जब ग्रेविटेशनल एनर्जी इज मच मच लेस देन केबीटी. ठीक है, और एक चीज बताना चाहूंगा कि जो आपके ग्रुप का डिस्क्रिप्शन है उसमें अगर आप जाओगे तो नेट का एक फोल्डर है, तो उसमें मैंने किसी स्टूडेंट का एक कॉपी भी रख रखा है, उसका स्कैन कॉपी, कि अगर आपका कहीं कुछ छूट जाता है तो इवन यू कैन टेक इट एज अ रेफरेंस. ठीक है, देखा है किसी ने? Yes, sir. मैंने Yes, sir. मैंने देखा. ओके, सो दैट इज समटाइम्स वेरी हेल्पफुल ना, कुछ छूट जाता है या कुछ हो जाता है ना, तो यू कैन टेक इट एज अ रेफरेंस. सो एवरीथिंग इज फॉर योर हेल्प. आपको जिस भी तरीके की हेल्प की जरूरत है, तो वी आर देयर टू हेल्प यू. ओके, अब ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. पहले क्वेश्चन की बात को समझो कि जो पार्टिकल्स हैं उनमें आपस में वैंडरवाल इंटरेक्शन को महत्व नहीं दिया गया, सपोज दैट इज नॉट प्रेजेंट, बट जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड में है ना,
यहाँ पे 0 है, और अगर मैं यहाँ पे रैंडमली कोई पार्टिकल ले लूं जो कि z हाइट पे है, तो इसके पास ये जो पार्टिकल है, इसकी अगर एनर्जी लिखने पे आ जाओ हैमिल्टोनियन को, तो कैसे लिखोगे? बोलो। p²/2m and plus mgz. This is important. Yes? बोलो भाई। और p², p कितने डायमेंशन में होगा? 3 dimension. It will be in 3 dimension, 3D. Because cylinder है ना? So it will be in 3 dimensions. So let us do this. So Hamiltonian is this. So what will be the partition function of one particle? बोलो भाई. It will be 1 by hq. Integral e to the power minus beta h into, बोलो भाई, dp dq. But dp dq कैसे होंगे? So it will be, dp will be, let me write it like this. dp will be dpx, dpy, dpz, and dq will be dx, dy, dz. So 6 integrals will be there, right? ये बात सबको समझ आती है? Yes, sir. Because now, हाँ जी बताइए आप, क्या नाम है? धीरेन? Yes. धीरज? हाँ, धीरज समझ आ रहा है? Yes, sir. Because almost धीरे धीरे we are coming to the end of canonical. So you should realize it now that it will be integral e to the power minus beta, and h will be, बोलो भाई, p²/2m plus mgz. It will be like this. So 2 integrals let me put now. Huh? क्यों भाई? And this thing, if you don't mind, I will write it as 4 pi p square dp. Is that okay? And for this as dz. And dx dy, the complete integral will be the area that is given. So that will come out as capital A. ये देखो जरा. And now limits will be, p will be carrying the limit 0 to infinity, and z will be carrying the limit 0 to L. Is that okay? So the p is carrying the limit 0 to infinity, and z is carrying the limit 0 to L. तो ऐसा आपने पहले लिखा हुआ है dpx dpy dz को 4 pi p square dp? सर ईएमसी में लिखा था है क्या? सर, इसे कन्वर्जन सर ईएमसी में करते थे वो। EMT में अभी इससे पिछले क्वेश्चन में किया है यार. तो किशोर तुम कैसी बात कर रहे हो? सर पिछले क्वेश्चन में भी किया था। है अभी पिछले क्वेश्चन में नहीं किया है हमने फोटोन गैस में? किया था सर। तो तुम EMT क्या बता रहे हो? dpx dpy dpz को 4 pi p square dp नहीं लिखा था अभी? ये सर लिखा था। तो सेम ही तो यूज कर रहे हैं. ये सर। एनीवेज चेक करो भाई, समझ आया? ओके अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आराम से. तो z1 क्या हो जाएगा? 4 pi a. This will be last chance.
ऑलमोस्ट लास्ट चांस टू अंडरस्टैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन, इसलिए कोई डाउट है तो पूछते रहना। 4 पाई a by h cube limit 0 to infinity e to the power minus beta p square beta by 2m p square into p square dp, और इसका 0 to l बोलो भाई, e to the power minus beta mgz MGZ dz। DZ. सर हाँ हाँ सर यहाँ बोलो। मोमेंटम की लिमिट -∞ से ∞ नहीं होती। पिछला पिछला देखो जरा क्वेश्चन। हाँ सर, वहाँ 0 से ∞ क्यों? स्पेयर की वजह से सर, कैसे? यस, ये मोमेंटम स्फीयर है ना, ओके सर। p इज लाइक दिस, तो यहाँ लिमिट 0 है और यहाँ पे इंफिनिटी। ठीक है, यस सर। अब ये इंटीग्रेट कर लोगे, z1 कितना हो जाएगा? 4 पाई a बाई एच क्यू, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? 1/2 गामा 2 + 1/2 अपॉन अल्फा 3/2, और इसका e to the power minus beta mgz अपॉन माइनस बीटा mg लिमिट 0 to l। हाँ जी, करें इंटीग्रेट, फटाफट बताओ। z1 क्या हो जाएगा? 4 पाई a बाई एच क्यू इंटू 1/2, ये कितना है? 1/2 अंडर रूट पाई, ये 2m kbt टू द पावर 3/2 इंटू ये 1 माइनस e टू द पावर माइनस बीटा mgl अपॉन kbt by mg। This will be the partition function। ये पाई को यहां भेज देता हूं, 2 पाई m kbt, 2 पाई m kbt। सर 1/2 1/2 4 भी चल जाएगा।
1 by 2, 1 by 2, 4 will also get cancelled. ठीक है? Yes. So now this is Z1 and we should be able to write. So Z1 को थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लो, जो चीजें हट गई उनको हटा देते हैं. So क्या आ जाएगा? A by HQ 2m by kbt to the power whole 3 by 2. 1 minus e to the power minus beta mgl into 2 pi m kbt to the power 3 by 2. बोलो भाई. Into kbt to kbt by m. by mg. Is that okay? Yes. And I can just erase all this. It's very nice question. अगर ध्यान से देखोगे. This is the partition function. So one question was about the partition function. Now, another question is that what if MGL is much greater than KBT? That means the potential energy dominates the kinetic energy. ये ऐसा बहुत ज्यादा लाइट का क्यों बन जाता है, ये नहीं समझ आ रहा है. आप लोगों को दिखाई देता है क्या वो स्पॉट? सर कभी कभी काफी शाइन करता है वो पार्ट. हम्म. अब ज्यादा क्या? चलो बाद में देखेंगे. अभी दिख रहा है. यस सर. सो अगर MGL बहुत बड़ा है KBT से, तो यहाँ देखना ध्यान से. It is like this, MGL by KBT. तो अगर MGL is very large, so what will happen? E to the power minus MGL by KBT क्या हो जाएगा? If this is very large, it will become 0. Yes or no? Yes, sir. So your Z1 will become A by HQ and 2 pi m KBT to the power 3 by 2 into KBT by mg. So that means Z1 is some alpha to the power t to the power 5 by 2. Yes or no? So your energy will be also 5 by 2 KBT. It is like this always. Power जो है वही translate हो जाता है. And if there are n particles होंगे तो 5 by 2 n KBT and CV will be equal to 5 by 2 R. Okay? तो देखो ग्रेविटेशनल डोमिनेट कर रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी ऐड हो गया है. ऐड हो गया है कि नहीं? अगर प्रॉपर मोनोएटॉमिक की तरह बिहेव कर रहा होता तो 3 by 2 KBT होती काइनेटिक एनर्जी, बट 3 by 2 KBT के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो एडेड, सो दैट्स व्हाई इट इज 5 by 2 KBT. यस और नो? Yes. ये बात समझ आ रही है क्या? इफ MGL इज much greater. Now let us take smaller. ये मिटा दूं? ये समझ आ गया सबको? So here you can write the extra degree of freedom is coming because of the gravitational energy, because you are taking gravitational energy greater than the thermal energy. And if I take
mgl less than kBT. Then what will happen? Z1 will become A by HQ 1 minus mgl by kBT. Okay, and into 2 pi m kBT to the power 3 by 2 into kBT by mg. It will become like this. और हायर टर्म्स को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया. आई हैव अप्लाइड बाइनोमियल एक्सपेंशन. करेक्ट. सो इसमें z1 क्या हो जाएगा? इट विल बिकम अल्फा t टू द पावर 3 by 2. u कितना हो जाएगा? बोलो भाई. 3 by 2 kBT. n पार्टिकल्स के लिए 3 by 2 n kBT. And CV will become 3 by 2 R. देखो, your thermal energy is greater, so gravitational potential energy does not matter, so it is behaving like ideal gas. Ideal gas with zero potential, because if thermal energy is dominating, that means gravitational potential energy does not matter. So this was this. So write this situation also, that when thermal energies dominate, then the gas in this gravitational field also, it is behaving like ideal gas, because gravitational energy is not dominating in this case, thermal energy is dominating. ये दोनों ही केस स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर डिपेंडेंस सब अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है. ओके, क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क. सर हम्म. सर पार्टिकल इसके अंदर होगा यार तो तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है. नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड. क्या बोल रहे हो? हाँ सर, अगर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होगा इसके अंदर, बॉक्स के अंदर, तो एनर्जी में कोई चेंज होगा? सॉरी, इनिशियली ये सर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल अगर होगा तो एनर्जी के जो फॉर्म है उसमें कोई चेंज होगा? जो इन पार्टिकल का इनिशियली जो क्या एनर्जी है पार्टिकल हो? सर, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का बात कर रहे हैं. तो अगर वो तो कोई पार्ट फोटॉन Z1 गैस इसके लिखने के अंदर है बाद होता है ना. वो तो after writing n particles. So if you are taking indistinguishable particle, then it will become Z1 to the power n by n factorial. Okay, but for energy you take derivative, na? Right? Yes, sir. For energy you take derivative. तो Z1 की पावर n by n factorial लिख के फिर डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा. ठीक है? So I am taking it as a classical particle. So I am taking Zn is equal to Z1 to the power n. So that means distinguishable. If you want to take it indistinguishable, then take Z1 to the power n by n factorial. Okay? And then calculate energy. ठीक है, Sodan? This thing is not available. Okay, then thank you. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.